There was always this fire in me which made me do this. Is ELO the biggest e-commerce brand in Pakistan? ये हमारे leftovers होंगे, हम बेचेंगे, हम निकल जाएंगे, काम खत्म. What are the challenges in the e-commerce? तो सबसे बड़ा challenge right now for all e-commerce companies is Does that trick work in the e-commerce that you sell it up on that costing part? it's a part of marketing. Some brands who are messing things up, I think they're just playing with the trust of the people buying online. रोज 350, 400, 500 पार्सल वापस आता है जो कस्टमर रिसीव नहीं करता. इसमें कस्टमर भी कोई बहुत अच्छा तो नहीं कर रहा. I'm going to be very honest. I cannot satisfy all the customers. Any particular event that happened that way around? अब इस बंदे को अगर मसला है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसके लिए सिलाई थोड़ी करूँगा. He is not my customer. How much people have converted in Pakistan towards the prepayment? पाकिस्तान में ये डर बहुत ज़्यादा है ना कि इन्होंने मेरे पैसे ले लिए और फिर मुझे पार्सल ही ना भेजा. Courier companies are just not cooperating that. अगर आप मेरे से आज पूछोगे कौन सी कोरियर कंपनी अच्छी, मैं कहूँगा कोई भी नहीं अच्छी, because they are so bad. Usually we started off with a very generic question, yet a bit tricky one, but obviously that is something that somebody should definitely know about. So the first question is definitely about, who is Umar Qamar? Apart from ELO, people know you by the brand, people know you by what you are doing in your career and all that stuff and what you own. You are sitting at a fancy designation and all. But who is Mr. Umar Qamar in person and what he wants to achieve in life? And that is something that probably defines that where the person is going to be in the life. So again, I feel like I've become more professional in a sense कि यार I think about my business and ELO has become part of me. But if I take ELO out, I'm quite interested in trying out new stuff, listening to new music, watching films from across the world. Basically, I want to be very cultured. I want to know what's happening, and I really, really enjoy, understanding the world and seeing things from learning other perspectives as well. कि ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, अफ्रीका में ये क्यों हो रहा है. I'm very fascinated about this concept called contrast traveling, which I would like to do in a few years. It's basically you go to a very rich country for a few weeks, and then you go to a very poor country for a few weeks. And then you try to figure out how they solve problems in a rich country. If it's a transportation problem, how are they solving that problem in, for example, Switzerland? And how are they solving the same problem in Algeria, for example? So, trying to understand world through different lenses. I'm very interested in that. And I consume a lot of content which kind of explains things, how they are solving problems in different parts of the world. And that's where I get my inspiration from as well. And I learn a lot of things from those areas. Well, that is a bit of a cool to know about, because usually founder try to connect, themselves with using a one word with their business that they're doing, right? Yeah. So you're in the e-commerce, and you're just trying to, see the world with a different lens, as you just told about. However, did you come to know about you will be doing the e-commerce and you will be selling online at any part of life, or is it something that just happened randomly in your life? I don't think I was expecting this to happen. I've told this in many podcasts before as well, that I used to, when I finished my university, I came back and I joined my father's business, and the business was doing well. I didn't want to basically take over somebody's job, because if you are son of the CEO, you always take up a senior position, you become a director automatically, and you're calling the shots. But in my position, the company was doing well. I was of this interest that I want to start my own brand, and I started working on my own brand. But I realized that the volumes I was doing was way too small for my father's factory. So for example, we were doing 200 pieces. I said I want 200 pieces in one style. And he was, the company's manager was like, it's a very small quantity. And, I was on the back burner, nobody was listening to me. So I was very kind of dissatisfied with what's happening. And after that,
there was one fine day, somebody called us and they said that we have gone bankrupt, we don't have any money, the goods you have made, don't send it to us, keep it with yourself. And that's how the company started. So we were just trying, like the whole concept of the company was that we had about $300,000 worth of merchandise sitting in our factory, which we couldn't sell it to anyone else. So that was something, that's sort of an opportunity that you just So grabbed. yeah, so basically I saw that opportunity. The first concept was that, okay, we are just going to sell this merchandise and that's it. We And I've never heard- thought of a long-term business. We just thought that we are just going to sell this leftovers and move on. And what was the journey about it? Like I just came to know about, like, you initiated in 2013, right? Yes. How much time it took, to convert it up into the business as a whole? Like you I started up as a think leftover. within the first 5-6 months, we started hitting 100,000 rupees a day. So when we were doing 100,000 rupees a day, we thought it was serious business, because I, as a young kid, like 23, 24-year-old, thought that this is good, because I never realized, I hadn't done any business before. I hadn't done any entrepreneur, like I had no experience of running a business. So for me, when I started the company, I was like, I had a very small goal, you can say, that even if I do like 50,000 rupees a day, it would be a good day. I'll sleep happily, because I did all of it on my own. Like I set up the company myself, I set up the website myself, I did all the photography, I was the telephone operator, I was the one writing the descriptions, I was the one packing it, I was the one, doing everything, like dealing with the courier companies as well. So for me, that was pretty big, because I did it by myself. Yeah. And if you look at all the processes in the company, to this day, I have done all of those operations. So, if somebody comes in and I know what his job role is, because I've done it. Yeah. I'll ask some of the tricky questions, like apart from the content that you have discussed, maybe on the other elements or the other platforms, since you have been there in the media though before. Some of the tricky questions, in a way, like you are from Faisalabad, right? You're from this city over here. Most of the people, try to carry out with their, legacy of their father, from the parents. How difficult it was, to become self-dependent and, just drift around that way. And when the burden just came into your shoulders, like you started up as selling out the leftovers, but then all of a sudden it just, came directly or indirectly rightly into the ELO, right? So I want to play around with the mindset of the people who always feel like, yeah, we can just easily carry on the legacy rather than doing something on ourselves, right? So how comforting it is when you just start realizing it out that, yeah, I have done something on my own, and that is something that has assisted your family business and your parents, and yeah, became a part of it. Like you always wanted, like I think in every person's brain there is a thing saying that I need to prove something to somebody. I don't think it's kind of like you have to prove something to your father, to your girlfriend, to your wife, to your kids. I feel there is always a thing pinching that I want to prove it to, that I can do it. So for me that was very important, because I came back, finished university. A lot of my friends were doing business, joined their father's business, but I didn't want to do that. I wanted to see that if I can do something on my own. So there was always this fire in me which made me do this. And I think it wasn't like a solo thing. My father really helped me, because if it wasn't for him, I wouldn't have had the leftovers in the first place. I was born into this family who was in textiles, and but the good thing is that we saw the opportunity and we made it happen, because a lot of people in Faisalabad have these factories, have bigger manufacturing facilities, but still were not able to execute ELO or export leftovers. Yeah, that is the point. Like I see a lot of individuals, young individuals. बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार family business है. We can just we can just easily carry it further ahead and just keep it going. And they just don't try to think about the different dimensions they can come up with. They can start their own business in a different dimension, like you did, right? और वो यही समझते हैं कि यार business conventional business है, ये processes हैं, ये चलते आ रहे हैं, and that is something that we just need to follow out, and then that is how we can just flourish it. And one more perspective that just come into play is that people think that IT, हमारे यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक
आम सी बात है कि नाउ वी आर क्रेजी अबाउट द IT, that build your careers in the IT, build your careers, learning the IT courses and everything. However, we need to understand that IT is not the ultimate goal, but IT is a part of every business. IT can be a part of every business. You didn't drift your career from a textile towards the IT, but you use the IT for that perspective, right? तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट ड्रिफ्ट ये आ जाता है कि आईटी पे वो सीख लो, ये वाला स्किल आया ये सीख लो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, वेब डेवलपमेंट सीख लो, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख लो. हाउएवर कन्वेंशनल बिजनेसेस को आईटी को यूज़ करते हैं हमने कैसे इम्प्लांट करना है, दैट इज समथिंग दैट आई थिंक वी आर जस्ट मूविंग फार अहेड. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? हाँ, मैं भी यही समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब हर बंदा जिस तरह व्हेन आई स्टार्टेड द कंपनी, अब हर मतलब जो मेरे दोस्त यार थे जो थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने कहा हाँ जी हम भी ई-कॉमर्स स्टोर खोल लेते हैं, एंड दे थॉट दैट वाज आईटी. एंड आई फील running an e-commerce store is not really IT because it's pretty simple. I don't have an IT background. I don't know how to code. I don't know how to program. लेकिन मैं use कर सकता हूँ because they have made technology so simple. Like platforms like Shopify have made things so easy that it complements doing what you want to do. जिस तरह अब आई डोंट नो क्लेवियो या मेलचिम से पहले ईमेल मार्केटिंग किस तरह होती थी, बट नाउ यू डोंट नीड टू हैव एन आईटी डिग्री टू डू ईमेल मार्केटिंग. Even in 2013 there was a lack of learning available on the online platform. यार मुश्किल तो था, लेकिन अब जिस तरह But now it's so much an open source. यार अगेन आई फील लाइक कि सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में मसला है ना वो मैं खुद भी इसी तरह हूँ वैसे तो, लेकिन फियर ऑफ फेलियर का बहुत ज़्यादा मसला है कि आपको यू आर जस्ट ट्राइंग टू लुक फॉर एक्सक्यूजेस टू नॉट स्टार्ट. सो फॉर एग्जांपल कोई बंदे ने ई कॉमर्स स्टोर शुरू करना है, वो सबसे पहले कहेगा कि फेसबुक का पेज किस तरह बनता है, फिर पिक्सल किस तरह लगता है. दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, बट वो देखो अगर आपने काम शुरू करना है तो यार करना है, ख़त्म होगी बात. यूट्यूब पे लिखोगे सब कुछ तो मिलता है कि पिक्सल किस तरह इंस्टॉल करना है, ईमेल मार्केटिंग किस तरह करनी है, शॉपिफाई की फीड फेसबुक के साथ किस तरह कनेक्ट करनी है. आई डोंट कम फ्रॉम IT बैकग्राउंड एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स दैट डिफिकल्ट. लिटरली अगर आप वीडियो देखो कोई भी 5 मिनट में आपको समझ आ जाएगी ये काम किस तरह करना है. सो आई फील लाइक कि अब एक्सक्यूजेस भी नहीं है आपके पास. इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग यू कैन स्टार्ट समथिंग. वो मोटिवेशन और विल पावर और फेलियर के यार नहीं चलेगा, बाप मुझे लड़ेगा, मेरी खानदान में बेइज्जती होगी, ये वाला चक्कर बहुत ज्यादा है. So it's a different in mindset, that just drifted things up a bit. I mean, the people are just not being able to come with something on their own rather than even in the conventional businesses. अब जैसे बहुत से रिटेल स्टोर्स हैं, like it doesn't mean that your father belong to owning the factory or exporting things out. बहुत से रिटेल स्टोर्स हैं. We see a lot of shops even in our town in Faisalabad that I feel like the children of those that can really turn into an online business. But I think is it a drift on the mindset that is just not allowing them to convert that, I would say? यार वही अगेन माइंडसेट तो 100% है ही, क्योंकि उनकी भी बड़ी खुशी और कंफर्टेबल लाइफ है. दे आर लाइक हाँ ठीक है यार, बाप ने भी पैसे कमाए, दादा ने भी पैसे कमाए, इसी काम से कमाए हैं, मेरी भी लिखी हुई है, मैं भी ये कर लेता हूँ. सो आई थिंक दे नीड टू हैव अ बिगर विजन एज वेल व्हाट दे वांट टू डू. अगेन हम लोग की ड्रीम्स भी छोटी होती. मैं तो खुद अपनी कहूँगा कि मेरी ड्रीम भी छोटी थी. मैंने जिस तरह आपको शुरू में ही कहा कि 50,000 रुपीज़ a day, and I thought it was a good day. It would be a good day, but again it's a small dream. आपकी you have to dream bigger. तो वो dream bigger वाला सीन भी नहीं है ना, because again we haven't seen कि दुनिया कितनी बड़ी है और दुनिया में पैसे कमाना क्या चीज़ है. मतलब लोग अब अमेज़ॉन की तो मेरा ख्याल है 1 मिनट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की से मतलब अली बाबा वो जो 11/11 सेल होती है अली एक्सप्रेस पे, अली बाबा पे, दे डू लाइक 1 घंटे के अंदर $50 बिलियन, $60 बिलियन की सेल वो कर लेते. तो हम लोगों के तो अभी वो दिमाग कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर रहे चीज़ें कि दुनिया में क्या हो रहा है. Even though having such a densely populated country, right, being over here, what is the future of e-commerce in Pakistan and the current landscape of Pakistan in e-commerce? यार देखो अभी भी ग्रो तो कर रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इट्स गोइंग टू ओवरटेक रिटेल स्पेस एनी टाइम सून. इट्स दैट्स नॉट गोना हैपन. राइट नाउ आई थिंक वी आर डूइंग लाइक 3-4-5% ऑफ आवर सेल्स व्हिच इज ऑनलाइन. Is it growing? Is it growing? ऑफ कोर्स ग्रो कर रही है. आप इसी वजह से तो जितने भी बंदे हैं उन लोगों के हर रोज आपको फेसबुक पे नई कंपनी नजर आती है. कभी कोई कॉस्मेटिक्स का ब्रांड खोल रहा है, कभी बिकॉज यार देखो रिटेल स्पेस के अंदर खर्चा बहुत ज़्यादा है. दुकान बनानी है,
फुटफॉल लाने के लिए आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। ऑनलाइन का क्या है, आपने थोड़ी सी इन्वेंट्री बना के वेबसाइट बनाई, पूरा पाकिस्तान आपका कस्टमर है। सो इट्स वेरी इजी टू स्टार्ट, barriers to entry are very low, so it makes sense. If you have limited capital, you can I think you can easily start an e-commerce store in like 5 lakh to 10 lakh rupees easily. 5 से 10 लाख रुपए में आपका स्टोर बन सकता है with limited products. तो दुकान में तो यार किराया ही आपको इतना ज़्यादा पड़ जाता है। अगर आपने डी ग्राउंड में भी दुकान लेनी है फैसलाबाद में, तो चंगा भला किराया है यार इस काम का। Saturation बढ़ गई है अब तो, you know, it's saturated that way around, but you know, I यार think there is still a lag over it. देखो, again, competition is getting tougher and tougher because I'm just going to give you a very clear example. In 2013, when I started the company, Facebook की रीच ही बहुत ज़्यादा होती थी। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे लाख फॉलोअर्स हैं या लाख फैंस हैं या लाख लाइक्स हैं ELO के पेज के ऊपर। आई यूज टू पोस्ट अ फोटो ऑफ अ प्रोडक्ट, तो उसकी रीच होती थी 2 लाख की, 3 लाख की, क्योंकि फेसबुक पे उस तरीके से एड्स ही नहीं चलते थे। बहुत थोड़ी कंपनीज थी, ऑनलाइन कंपनीज थी ही नहीं। 2013 में मैंने काम शुरू किया, 2012 में मेरा ख्याल है दराज आया, और 2012 में टेलीमार्ट था। तो ब्रांड्स ही बहुत थोड़े थे। ये सैफायर, गुल अहमद, ब्रेकआउट, आउटफिटर्स, दे स्टार्टेड देयर ई-कॉमर्स इन 2016 2017। तो हम तो उनको भी प्रीडेट करते हैं, लेकिन कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ा है और बढ़ना ही है यार। अभी हमें तो रिटेल का पता ही नहीं है कि रिटेल में क्या हो रहा है। हर काम में कंपटीशन है, बट यू हैव टू फाइंड व्हाई पीपल शुड बाय फ्रॉम यू। तो मेरा तो हमेशा सवाल ही ये होता है लोगों से, जो भी बंदा मेरे से बात करता है ई कॉमर्स के बारे में या मैंने अपना काम शुरू करना है, तो मैं उसको यही कहता हूँ, सबसे पहले सवाल आपने ये पूछना है अपने आप से कि व्हाई शुड पीपल बाय फ्रॉम यू। And if you're enabling yourself that you can buy from your store, that means like you are selling out a good product. I think that is the first parameter that you need to come across. If you are wearing an ELO yourself, that means you are validating the product yourself. Of course. And I think that is the one point that most of the people miss out over here. Despite I mean, like, I understand the whole structure of it. What are the challenges in the e-commerce? Like, people come across with tons of challenges over here in Pakistan, and still in the local market, what do you think about like having those sort of challenges? Again, मुझे ये लगता है कि ये challenges early days of e-commerce across the world होंगे, कि हमें जो सीधा sizes का मसला आता है। अब I feel like कि Amazon ने जब गारमेंट्स बेचने शुरू किए होंगे, उनको तो खैर अभी भी बहुत ज़्यादा रिटर्न्स, लाइक Amazon's क्लोथिंग रिटर्न्स आर अबाउट 40%, कि 100 चीज़ें अगर बिकी तो 40 लोग वापस कर देते हैं साइजेस की वजह से। लेकिन पाकिस्तान में 2 किस्म की रिटर्न्स हैं। एक, डिलीवरी करते जब गेट पे बंदा गया उसने वहाँ पार्सल रिफ्यूज़ कर दिया, और एक उसने पहना और उसको पूरा नहीं आया तो वो पार्सल उसने वापस भेज दिया। तो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चैलेंज राइट नाउ फॉर ऑल ई कॉमर्स कंपनीज इज कि द डिलीवरी रेशो इज़ अबाउट, जो रिटर्न रेशो है वो 10-12-15% है। इंडस्ट्री एवरेज है 10%। तो मेरा ख्याल है एक आम स्टोर रिटर्न है ही है कि आपने लाख रुपए की सेल की है तो 10,000 रुपए का ऑर्डर आपको वापस आ जाने, क्योंकि कस्टमर ने रिसीव ही नहीं किया। एंड दैट्स सो इफ यू आर सेलिंग अ टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट। नहीं, वो कस्टमर का जाता ही कुछ नहीं है। उसने ऑर्डर किया, उसने कहा कि हाँ मैंने नहीं लेना। अब वो आपका टॉप क्वालिटी या बॉटम क्वालिटी, उसने तो पार्सल खोल के भी नहीं देखा, उसने तो कुरियर वाले को ही रिफ्यूज कर दिया। And that is one problem that can be solved out through payment gateway. हाँ, 100%। बिकॉज अब थोड़ा सा उसमें यही है कि इंसेंटिवाइज गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि जो 17% सेल्स टैक्स है, जिस तरह आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो अगर आप कार्ड से पे करते हो तो 5% है, अगर आप कैश देते हो तो 17% है। तो वी हैव टू इंसेंटिवाइज आवर पीपल। तो अगर गवर्नमेंट हमारी भी थोड़ी हेल्प करे और वो कहे हाँ ठीक है यार, ई कॉमर्स के ऊपर भी यही करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ट्राइंग टू, मतलब हम लोग उन लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आना चाह रहे हैं बंदों को। तो अगर टैक्स नेट के अंदर लेकर आना चाह रहे हो तो सबसे बेहतरीन हल है कि यार वो कार्ड यूज़ करें, बैंक अकाउंट बनाएं। पाकिस्तान में बैंकेबल जो पॉपुलेशन वो है ही इतनी थोड़ी। मेरा ख्याल है वन ऑफ द लोएस्ट पॉपुलेशन पेनिट्रेशन है बैंक्स की पाकिस्तान के अंदर। सबसे थोड़े बैंक अकाउंट्स हैं पर कैपिटा पाकिस्तान में। इंडिया से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है। मेरा ख्याल है सिर्फ अफगानिस्तान से ज़्यादा साउथ एशिया के रीजन के अंदर। तो अगर आप लोगों ने बैंक अकाउंट्स लोगों को करना है तो उनको इंसेंटिव नहीं दोगे तो वो नहीं यूज़ करेंगे। And e-commerce market, I mean,
even in the clothing, you come across with the competitors even in the last 10 years. I mean, like you see like people are growing and coming out in this industry and all. What is the main reason for their failures? Because I see across tons of stores opening up and then closing down very early, and then another tons of stores coming up and then wiping out very early. What is the main reason that they are just lacking out in between? Because you have been through the journey of for the whole 10-11 years out there. तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ई कॉमर्स पे या लोग ऑनलाइन सेल करते हुए दे आर मिसिंग आउट फ्रॉम दोज एलिमेंट्स? यार एक चीज़ तो मुझे ये फील होता है, ठीक है, अगेन कंपटीशन तो है ही है, लेकिन परचेजिंग पावर पाकिस्तान में नहीं है. अगेन इफ़ यू आर एन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड जैसे सैफायर, आउटफिटर्स वगैरह, जिनकी ऑफलाइन प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा, उनके लिए आसान हो गया ऑनलाइन चीज़ बेचना. लेकिन एक नया बंदा आया है और उसकी इतनी रिटेल नेटवर्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. उसने पहले अपने आप को वैलिडेट कराना है, फिर चीज़ करनी है, और फिर उसके बाद कस्टमर को 5,000 रुपये की टी शर्ट नहीं बेच सकता. उसने बेचनी भी 700-800 और 1,000 रुपये की है. तो यार इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट डजंट मेक सेंस. So the margins are very, very thin in Pakistan at the end of the day. How you started up with the price differentiation? You have been just exporting it up, I mean, like, and we can see there is a huge difference, at the export price and the price that you sell over here. There is a huge difference. So how you just cope up with that? मतलब एक जो shirt जो है, you were just previously selling out for $10, I guess. Worth somewhere around, for the current dollar rate, it's somewhere around 2,700 or 2,600. And I see like that sort of product being on the ELO, I think somewhere around maybe 1,500 or 1,600. I think maybe 50-60% if I'm just not. हाँ, मिनिमम. बिकॉज यार हम लोगों का तो ये है ना कि वो अगर एक वेबसाइट अमेरिका के अंदर उसको $10 का बेच रही है, तो यार एक्सपोर्ट तो वो $3-4 का ही हुआ है ना. एक्सपोर्ट तो वो मैक्सिमम 1,000 रुपये की हुई होगी. तो हम लोग तो उस मार्जिन के हिसाब से बेचते हैं कि भाई पाकिस्तान में मुझे इतनी कॉस्ट पड़ी तो मैं इतने पैसे तो रिकवर करूँ. तो दिस इज व्हाट ELO इज, दैट we sell the products that we export at local prices. हम आपको जो अमेरिका में जितने की बिकनी उतने की नहीं बेचेंगे, पाकिस्तान की प्राइसेस में बेचेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल यू गो टू ELO एंड यू सर्च फॉर जीन्स. मेरा ख्याल है कि बुरी से बुरी जगह पे भी $30 से कम की आपको जीन्स नहीं मिलनी, जो आज के ज़माने में तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये. हमारी वेबसाइट पे आपको 2-2.5 हज़ार रुपये की मिल जाती, आराम से 2,000 रुपये की. So again, because export price तो वो नहीं है ना उसकी. Did you come across with the price differences, as a problem in the early stages? Because मुझे ऐसे लगता है कि e-commerce store में ना अभी भी currently, लोग they suffer it out that way कि उनकी initial cost जो है that is somewhere around 3,000 or maybe 2,500, and they are forced or compelled to sell at the same price. नहीं, ये वैसे हम लोग आपको थोड़ा सा export leftovers का concept समझा देता हूँ. So the concept is when we initially started, तो हम लोगों ने जब वो फैक्ट्री ने $3 लाख का कह दिया कि भाई बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम लोग माल ना भेजो, तो उस बंदे ने हमें $1.5 लाख एडवांस दिया हुआ था. $1.5 लाख हमने डिलीवरी पे देना था. हम लोगों ने 300,000 वर्थ ऑफ गुड्स हमारे पास पड़े हुए थे. $1.5 लाख आ चुका था. $1.5 लाख की रिकवरी करनी थी. हमने लॉटिए को बुलाया. लॉटिए ने कहा कि जी अगर मैंने एक गारमेंट वो फॉर एग्जांपल $5 या $6 का एक्सपोर्ट किया हुआ, लॉटिए ने आके उस गारमेंट का मुझे रेट दिया $1, जो कि मैं कहता हूँ फॉर कन्वीनियंस से 100 रुपये का डॉलर था. तो जो चीज़ हमने 600 रुपये की एक्सपोर्ट की भी थी, वो कहता था मैंने तुम लोगों को 100 रुपया देना. हम लोगों ने भी, क्योंकि वी वर एट दिस स्टेज के यार ये $150,000 इज अ लॉट ऑफ मनी, हम इसकी जान छुड़ाएं, इसको बेचें और जितने पैसे रिकवर जितनी जल्दी कर सकते हैं वो करके फारिग हुए. हमने जब वेबसाइट बनाई तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट was not 600 rupees, was 100 rupees कि लोकल मार्केट में वो कितने का बिकेगा. और फिर हमने प्राइस बिल्ड की कि चलो 100 रुपया मैंने उसकी कॉस्ट लगाई, तो मैंने वो 200-300 रुपए का बेच दिया. और लेफ्ट ओवर मार्केट चलती भी इसी तरह के. अब बहुत सी आप वेबसाइट, अब मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, डेनिम जीन्स पूरे पाकिस्तान में $6-7 से कम बन ही नहीं सकती. 1700-1800 रुपए की फ्रेश कपड़े से जीन्स कम बन ही नहीं सकती. हम लोगों की वेबसाइट पे वो 1,800-2,000 रुपए की पड़ी, एंड वी आर सेलिंग एट अ स्मॉल मार्जिन एज वेल. तो हमें उससे तो सस्ती पड़ती है ना. तो जो लेफ्ट ओवर वाला सीन होता है वो बंदा फंसा हुआ ही होता है. But still, I mean, that is fine, like even in the leftovers. But I am just actually questioning even a basis of, if somebody is going to start an e-commerce store, you have a huge experience from the e-commerce as a whole. Like, let's keep the leftover aside for a time being,
A person who started an e-commerce store, he's yet to build his audience, he's yet to build his customers, and in that, customer zone or that area, I think Sense and Stories is a very fine example of these days. I mean, like, they are selling out the perfumes at the very cheaper cost. People, in terms of grabbing an initial customer range or a customer, they're just going for a very low price, even at the price that they are just getting it costed at. So does that trick work in the e-commerce, that you sell it up on that costing part, and is it going to be sustainable model, or is it going to be a worry for a very near future of time, and ELO has gone through that sort of a time zone, or not at all? यार वी हैव बिन प्रॉफिटेबल फ्रॉम डे वन, तो मैं इसमें ये वाली बात तो नहीं करूँगा. हम लोगों ने ये बिल्कुल किए हैं कि जब हमारी सेल डाउन हो रही होती है तो हम चीज़ें सस्ती कर देते हैं, एंड वी सेल इट बिलो आवर कॉस्ट प्राइसेस एज वेल. सो इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, एंड आई डोंट थिंक इट्स सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म. But if you want to do a short-term gain, if you're thinking कि यार मेरा, so for example we have this goal of selling 30% of our inventory every month, कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ तो मैंने 30 लाख रुपए का 30,000 रुपए का बेच के ही जाना. एंड इफ इट डजंट फॉल, तो हम लोगों का अपना है कि हमने ये करके जाना है. एंड इफ यू आर नॉट मीटिंग आवर टारगेट, वी विल रिड्यूस द प्राइस जस्ट टू मीट दैट टारगेट, बिकॉज दैट कीप्स अस इन चेक. हमें वो इन चेक इस तरह रखती है कि यार हमारा कैश फ्लो तो ठीक रहता है ना, आया पैसा, निकला पैसा, माल खरीदा, कैश फ्लो तो पॉजिटिव हम लोगों को होना चाहिए ना. तो फॉर सम स्मॉल टाइम वी कैन डू इट, बट सस्टेनेबल कहाँ से होएगा यार? अगर आप एक चीज़ 100 रुपए की खरीद रहे हो और आप 80 रुपए की बेच रहे हो, तो सस्टेनेबल तो हो ही नहीं सकती. Yeah, but that is something that I know some of the brands that they're doing initially. Yeah, but I think it just questions of the sustainability in a longer run. हाँ, नहीं हो सकती, लेकिन वो ये है कि how they need to cope up with the price differentiation then, because people are not too much comfortable buying at a higher price on the online. That is the main problem. So e-commerce wala jo businessman hai, who's just starting it up currently at these days, because that is something that we just need to build an information, or provide an education to the people who are going to start their e-commerce store very soon, right? That is the purpose of having a debate this way around. So if somebody is starting it up that way, he cannot set up his price too high, he cannot set up his price equivalent to his cost, because he just need to meet out the other costs as well, so that he needs to generate profit as well. So in the middle, is this a problem for the different e-commerce stores these days, or not at all? यार देखो, again it takes time. It takes time to build you are audience. being in the part of the e-commerce price differentiation, यहाँ पे इस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या नहीं है? What do you feel about it? बिल्कुल है यार. मैं आपको एक बड़ी आराम से एग्जांपल दे सकता हूँ. आप अगर एक चीज़ 1000 रुपए की बेच रहे हो, उसकी प्राइस करो मतलब 20% कम कर दो, 700-800 रुपए की कर दो, आपकी सेल में शायद 30% इंक्रीज आ जाए, 40% इंक्रीज आ जाए. तो ये बिल्कुल इसी तरह है यार. वी आर अ वेरी प्राइस सेंसिटिव कंट्री, और ये सारी चीज़ें हैं. बट अगेन यार, सैफायर भी तो 5000 रुपए का जोड़ा बेचता है, उनका कार्ड साइज 6-7-8,000 रुपए है. But the branded bill. तो फिर यही बात है ना, ब्रांड पे काम करें हम लोग. ये प्राइस नहीं, अगेन बिल्डिंग अ ब्रांड टेक्स टाइम एज वेल. रास्ता की एग्जांपल है यार. रास्ता इज अ पाकिस्तानी ब्रांड आउट ऑफ लाहौर. यार $400 की हुडी बेच रहे हैं ना यार. ठीक है, हम सारे नहीं पहन रहे, लेकिन ऑडियंस है, ठीक ठाक एड स्पेंड, आपको ऐड नजर आता है उसका, तो कुछ तो कर रहा है ना वो. अमीर लोग भी हैं पाकिस्तान में यार, सारी हमारी तरह गरीब लोग नहीं है जो मतलब. अगेन देयर आर अ लॉट ऑफ रिच पीपल इन पाकिस्तान एज वेल. सो देयर इज एन ऑडियंस, एंड ही हैज डिफाइंड हिज ऑडियंस, ही इज मार्केटिंग हिज ऑडियंस वेरी वेरी वेल. तो मेरा ख्याल है कि जो ब्रांड की जीत है ना, वो प्राइस के ऊपर नहीं होती है. ऐसे वो एक ट्रस्ट डेवलप करता है कस्टमर के साथ कि जो मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ, it's worth the money you're paying for. And some of the brands have done that perfectly well. Like I said, Rasta, I'm not their audience, but there is an audience. I see people in Lahore wearing their hoodies. I see people in Lahore wearing their t-shirts. और वो महंगी महंगी चीज़ें यार, $150-200 की टी शर्ट पाकिस्तान में. आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि कोई बंदा पाकिस्तान में पाकिस्तानी ब्रांड के लिए इतने पैसे देगा. Is ELO the biggest e-commerce brand in Pakistan? No. Like for we were like for the clothing. The clothing, I cannot really say because मुझे numbers का तो नहीं पता, but Shopify के ऊपर तो we were the biggest Shopify store in Pakistan. तो वो according to the number of visitors who come to the website. But again, I have to really tell you, I cannot really tell कि ये value wise बड़ा है या नहीं है, because हमारा कार्ड साइज compared to any other brand is very small. Our card size is like 2700 rupees, 2600 rupees. बाकी ब्रांड्स के तो कार्ड साइज ही बहुत बड़े होते हैं यार.
वो 6,000 7,000 का कार्ट साइज है। अब ऑर्डर शायद मेरे ज़्यादा है लेकिन ओवरऑल वैल्यू उनकी शायद ज़्यादा है। तो इट्स अ वेरी tricky Numbers, question to yeah. answer, yaar. Yeah, I can totally understand. What ELO is doing that the rest of, the people missed out doing or not doing? Yeah, Any right. differential point that you just came I across feel through like data in your- developing trust with the customer was very important for us because at the end of the day, आपका कस्टमर जो ऑनलाइन के अंदर है ना वो चीज़ को हाथ लगा सकता है ना वो फील कर सकता है, वो आपकी एक ट्रस्ट के ऊपर आपको वो चीज़ खरीद रहा है। तो वो ट्रस्ट जब तक नहीं होएगा तो वो ऑनलाइन किस तरह खरीदेगा? पाकिस्तान में तो वैसे ही हम लोग को यही डर लगा होता है कि यार पहले चीज़ आएगी फिर पैसे देने हैं हमने। तो having that kind of mentality, customer really needs to trust to order from you. So I feel that was the defining moment for us to make it ELO, क्योंकि ELO का यही था कि we were the first company to introduce 30 days money back guarantee back in 2013. उससे पहले कोई भी नहीं करता था। अभी मुझे नहीं पता करते हैं या नहीं करते, एक्सचेंज शायद कर देते, रिफंड कोई नहीं देता। सो वी डू दैट एंड दैट हेल्प्ड अस अ लॉट बिकॉज पीपल वर लाइक ओके यार चीज़ नहीं पसंद आएगी हम वापस करेंगे, पैसे तो दे देंगे ना। बाकी ब्रांड्स का तो पता ही कुछ नहीं है क्या करेंगे, बिकॉज आई फील अ लॉट ऑफ ब्रांड्स यू गो ऑनलाइन दे से ऑल सेल्स आर फाइन, नो रिफंड्स, नो एक्सचेंजेस। Yeah, it happens. तो for us, we made it convenient for the customer to buy from us. And even I think e-commerce industry over here in Pakistan, the smaller brands are just messing it up big time. I ordered recently a bag there from the e-commerce, and it was a different color on the picture, and when it just got delivered, it was a different color altogether. And I think some brands who are messing things up, I think they are just playing with the trust of the people buying online, and one way or the other, they are affecting it up, right? हाँ यार, इसमें मैं देखें दोनों चीज़ें। अब जैसे रिटर्न्स वाला सीन है, इसमें कस्टमर भी कोई बहुत अच्छा तो नहीं कर रहा ना यार। मेरे पास रोज़ 350, 400, 500 पार्सल वापस आता है जो कस्टमर रिसीव नहीं करता, तो उसमें तो कस्टमर भी कितनी ज़्यादती करता है। मेरे पार्सल के पैसे लगे, कस्टमर ने ऑर्डर किया, उसको हमने टेलीफोन किया, हाँ भी तुझे ऑर्डर चाहिए, वो कहता है हाँ जी मुझे चाहिए। फिर मेरा बंदा वो पैक करता है, पैक करके वो शिप करता है, पैकेजिंग मटेरियल लगता है, कोरियर की कॉस्ट लगती है, वहाँ जाके फिर हम लोग वो पार्सल नहीं उठाता, मेरा कस्टमर सपोर्ट वाला बंदा उसको बार बार फ़ोन करता है, वो कहता है हाँ जी मैं ले लूँगा, वो 4 दफ़ा चक्कर लगाता है कोरियर वाला, वो फिर नहीं लेता, फिर वो पार्सल वापस आ जाता। मेरी कॉस्ट ये है, मेरी पैकेजिंग कॉस्ट भी लगी, मेरे टेलीफोन की भी कॉस्ट लगी, मेरी कोरियर कॉस्ट भी लगी, एंड अनदर कॉस्ट है कि ये जो 10-15 दिन का ट्रांजिट टाइम है, इसके अंदर वो पीस मेरी वेबसाइट से आउट हो गया। अगर उसने नहीं लेना था तो कोई और तो ले सकता था यार। तो वो कस्टमर भी पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छा तो नहीं है यार। It goes both ways. यार मेरा क्या कसूर है इसमें? No, I'm just not मैं blaming आपको you. ये कह रहा हूँ, I'm चलो just saying पाकिस्तान में एप्पल आ जाता आज और वो कहता है कि मैंने सीओडी का बिजनेस शुरू करना है। अब एप्पल इज अ वेरी रिलायबल ब्रांड और एप्पल के साथ ये होना शुरू कर दे तो आप कहोगे कि यार एप्पल कंपनी कर लेता। No, I'm not saying it out. I'm just saying it out. It goes both ways around. Like few of the companies are messing it up altogether. It's not like ELO is doing it. नहीं, I'm not saying, but I feel it's like not कि like- कस्टमर भी इसी तरह है यार। आपका कस्टमर जिस तरह वॉइस ऑफ कस्टमर है, even though if some of the brands are just messing it up altogether, it just uplifts the ELO as well because यार वो ठीक है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि again I am going to be very honest, as a brand manager I have come to terms that I cannot satisfy all the customers. मैं नहीं कर सकता यार। मुझे एक थोड़े दिन पहले एक कस्टमर ने पहले वॉइस ऑफ कस्टमर में लिखा, फिर उसको हम लोगों ने कहा कि चल तेरा केस रिजॉल्व करते हैं, उसको मेरी टीम ने फ़ोन किया, वो नई बात सुनी, मैंने कहा चल यार ये इतनी बहस कर रहा है, मैं इसको फ़ोन कर दूँ। यार द गाय वाज लाइक कि आपकी पेंट ठीक नहीं है। मैंने कहा क्या मसला है जी पेंट के अंदर? जी ये मेरा जो हाथ है या वो मेरा हाथ पॉकेट के अंदर नहीं जाता। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई तेरा हाथ पॉकेट में नहीं जाता तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपने पॉकेट की मेजरमेंट नहीं दी और ये जो थाइज हैं इधर से ये वो पूरी नहीं। मैंने कहा यार मतलब ये देयर हैव बीन लाइक 50 रिव्यूज ऑफ द प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज फाइन। अब इस बंदे को अगर मसला है मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसके लिए सिलाई थोड़ी करूंगा। भाई तुझे नहीं पसंद, वी हैव अ 30 डे मनी बैक गारंटी, तू वापस कर और तू रिफंड ले ले। वो कहता है नहीं जी मेरा केस सॉल्व करो। अब मैं उसका नहीं केस सॉल्व कर सकता, ही इज नॉट माई कस्टमर यार। क्योंकि मैं 1,000-1,500 रुपए की चीज के पीछे कितना टाइम लगाऊं यार, मेरी टीम कितना टाइम लगाए। अब उस बंदे को मैं सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता। उसने मुझे पता है क्या सजेशन दी? आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पॉकेट की मेजरमेंट लिखा करें।
और जिस दिन मैंने पॉकेट की मेजरमेंट लिखनी शुरू कर दी, उसने कहना किसी और चीज़ की मेजरमेंट करना, उसने कहना जिप कितनी लंबी है इसकी मेजरमेंट लिखें. आई कैन नॉट सेटिस्फाई दोज कस्टमर्स, दे आर नॉट माई कस्टमर्स. बिकॉज वो तो सिली बंदे हैं ना यार. तो ये सिली बंदे बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान में. तो क्योंकि यू नो लाइक गलती हो जाती है, हम कहते हैं यार हाँ बिल्कुल गलती हुई है, हम आपको पैसे आपके वापस कर देंगे, लेकिन इस तरह की बातों के लिए तो यार आई डोंट हैव टाइम. No, that makes sense. That makes sense. How much people have converted in Pakistan towards the prepayment? Like you 10 to 12%. तो हाँ 10 से 12% प्री पेमेंट पे and that figure has grown in the recent times. यार People are just मेरा हाल है पहले 2-3 साल पहले because 7-8 था. COD, I think they're just relying too much on the COD, and that is probably the root of a lot of problems these days. वो तो बिल्कुल है, बट अगेन आई फील लाइक कि अब जैसे कंपनीज लाइक फूड पैंडा, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग प्रीपेड Prepayments a lot. हाँ बहुत ज़्यादा. अब आपने फूड पैंडा में आपका वो कार्ड सेव्ड है, ऑर्डर आया यार ठीक है, कोरियर ऑर्डर कहाँ कैश है, रात के 10 बजे अगर 11-12 बजे आपने खाना मंगाया. तो आई थिंक कंपनीज लाइक फूड पैंडा हैव हेल्प्ड द प्री पेमेंट मार्केट एज वेल. Yeah, I mean, like even because it varies from business to business. Even in your business, it just helped. हाँ बिकॉज एक तो पाकिस्तान में ये था पहले, आज से 7-8 साल पहले अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते आपको यही डर था यार फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ. तो वो वाला एक कॉन्सेप्ट मिसकंसेप्शन जो थी वो खत्म हुई है. अभी भी ऐसे बहुत है, and you are just promoting it out like prepayments को one way or the other, like encouraging awareness and all that, because I think that solves up the a lot of problems with उससे e-commerce. देखो मुझे ये लगता है कि वो उसको प्रमोट तब करना चाहिए जब कस्टमर को सेविंग मिले. अभी तो देखो वो कार्ड से पेमेंट करे या कैश से पेमेंट करे, उसको पैसे उतने ही पड़ने, तो वो कहता है कि यार मैं क्यों करूं कार्ड से. सो ही अगेन देयर आर सम पीपल हु आर देयर फॉर द कन्वीनियंस कि हाँ मैं घर नहीं हूँगा तो मेरा चौकीदार रिसीव कर लेगा तो उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे. बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक नहीं, पहले चीज़ आएगी तो फिर मैंने पैसे देने. बिकॉज पाकिस्तान में ये डर बहुत ज़्यादा है ना कि इन्होंने मेरे पैसे ले लिए और फिर मुझे पार्सल ही ना भेजा, तो वो मैं नहीं चेंज कर सकता unless the customer is very loyal with us. Yeah, that is I think creating a lot of problems. I mean, and that is why people are still reluctant towards using the COD method, and that is where the story of returns begin, I guess, right? So it happens. What can be the right roadmap that's most of the newcomers in the online stores they can actually use in the local market? Keeping in mind the perspectives of the buyers, the people, the Pakistani customers usually act as. So what can be the right roadmap doing it? Keeping all those elements like price differentiation, lack of payment gateway, and all that stuff. So how can somebody evolve? Because one way or the other, if somebody is coming up, with an online business, it promotes the whole ecosystem one way or the other, and that is how I think we can just evolve over time, right? We just need to bring an awareness on the people that buy online, and there is a quality being on the online, sitting back at home. I think COVID promoted it big time, right? So what can be the right roadmap for the people to come up? यार मुझे ये लगता है कि again the hassle free returns is a big thing. Unfortunately we couldn't do it in our business model, but if a company comes in, if Sapphire comes in and says कि यार आपको एक चीज़ मैंने भेजी थी जो दराज टू एन एक्सटेंट कर भी रहा है कि आपको पूरी नहीं आई, आपको पसंद नहीं आई, जस्ट पैक इट एंड हमारा राइडर आएगा वो रिटर्न करके वापस ले जाएगा. क्योंकि पाकिस्तान में कन्वीनियंस का ही तो मसला है यार, कि वो आपका कस्टमर कहता है कि यार मैंने ये चीज़ ली, मुझे पसंद नहीं आई, अब मैं क्यों पैसे दूँ वापसी के. एंड यू आर लाइक यार अब तू दुकान पे चेक किए बगैर अगर तूने ले ली तो ये हो सकता है, बट अगेन ऑनलाइन में उसके पास वो ऑप्शन नहीं होती. बट ऑनलाइन में उसके पास ये ऑप्शन ज़रूर होनी चाहिए यार, मुझे साइज़ पूरा नहीं है, मैं वापस करना चाहता हूँ. और हमारे ऑनलाइन स्टोर्स कहते हैं नहीं तू वापस नहीं कर सकता. अच्छा, अब मेरे लिए ये मसला कि मेरे रिटर्न्स फ्री नहीं है, ही हैज़ टू पे फॉर द कोरियर कॉस्ट. सो if the margins are there and the courier companies cooperate, it makes a lot of sense. Because हमारे साथ अगर हमारे से गलती हो जाती है, हम रिटर्न पिकअप्स करवाते हैं, लेकिन वो रिटर्न पिकअप को 10-10 दिन लग जाते हैं. आपने एक ये कोट मंगाया मेरे से और वो आपको पूरा नहीं आया, ठीक है, और आपने मीडियम मंगाया था, मैंने आपको स्मॉल भेज दिया. अब मेरी गलती है कि आपने मीडियम मंगाया, मैंने स्मॉल भेज दिया. हम कहते हैं ओके सर कोई मसला नहीं, आप स्मॉल हम आपका पिकअप कर लेते हैं और आपको मीडियम भेज देते हैं. कोरियर कंपनी वो टेक 10 days to do that.
रिवर्स पिकअप्स में, एंड द कस्टमर गेट्स इन्फ्यूरिएटेड कि भाई मुझे 10 दिन क्यों लग रहे हैं, मेरा क्या कसूर, और देन ही स्टार्ट्स ब्लेमिंग द कंपनी. सो ये जो पार्टनरशिप्स है ना विद ई कॉमर्स ब्रांड्स एंड कोरियर कंपनीज इज सो इम्पोर्टेंट. और हमारी कोरियर कंपनीज अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची. नहीं यार, कुछ भी नहीं है. मैं अगेन आई वर्क विद ऑल दोज बिग कोरियर कंपनीज इन पाकिस्तान, बट नन ऑफ देम हैव चेंज्ड एनीथिंग. दे आर इक्वली बैड. आई वुडंट, अगर आप मेरे से आज पूछोगे कौन सी कोरियर कंपनी अच्छी, मैं कहूँगा कोई भी नहीं अच्छी, because they are so bad. Even though there have been few of the new companies emerged recently, but still they are just not up to the कोई mark. भी नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, कोई एक्सपर्टीज नहीं, कोई सिस्टम्स नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है. आपका पार्सल शिप हो गया होगा, उनके पोर्टल में लिखा होगा कि आउट फॉर डिलीवरी, और वो 10-10 दिन अपडेट ही नहीं होएगा. फिर आप उनको कहोगे, वो कहेंगे नहीं सर ये वाली रिपोर्ट नहीं देखनी थी, ये वाली देखनी है, या आपके पास तो डैशबोर्ड ही नहीं है जो हमारे पास है. एंड यू आर लाइक, हमारा और आपका डैशबोर्ड का क्या मतलब है भाई? फिर तूने डैशबोर्ड ही क्यों बनाया जब तुमने ये बातें करनी? And you being, the single vendor store is facing such problems, and we can understand the problem of the multi-vendor stores. हाँ बिल्कुल. Multi-vendor में तो ये problem बहुत ज़्यादा, it's implemented. And still, if the courier companies are just not cooperating that way, I think e-commerce is, yet to evolve big time over here. हाँ, I think ये courier companies have to really, step up because वो सबसे बड़े पार्टनर्स हैं हमारे, और उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता. एंड द रिजल्ट्स हैव गॉन डाउन. एक्चुअली अगर आज से आप 5-6 साल पहले कहोगे तो रिटर्न रेट्स वर लाइक 5-6% ऑफ द बिजनेस. नाउ दे आर 10, ईजिली 10. और ये जब कोई ब्लैक फ्राइडे या 11/11 या कोई इस तरह की कैंपेन आ जाती है तो ये तो 15-20% पे ले जाते हैं. And one worst side of it is that like it hits the brand. It doesn't hit the courier company. Of course. If I ordered something, it took me, 15 days for the return process as a whole, it getting exchanged. And I'll say that ELO has done it. I won't say that, something, a courier company, I won't name it, that they have done it. So that is the problem, So payment is a problem, a courier company is a problem. So these are the problems I think that we can just come up with and solve it out. But that is my question, like coming back to it. What can be the right roadmap for the people who are just coming in right now? मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये logistics वाला, figuring that logistics out is very important, and making the shopping experience fuss free. कोई फड्डेबाजी, कोई लड़ाई के बगैर वाला जो एक्सपीरियंस है वो, क्या आपने ऑर्डर किया, आप कहते हो कि यार मैं 9 से 6 बजे तक काम करता हूँ, मुझे पार्सल 7 बजे चाहिए. हमारे कोरियर कंपनीज के पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं 7 बजे पार्सल ले, मैं टाइम बता सकूँ. आप अमेरिका यूरोप में ऑर्डर करते हो, आपको एग्जैक्ट बताते हैं अमेजोन के ऊपर कि जी फलाने दिन आपको ऑर्डर मिलेगा, या फलाने, अगर आप वो एक्सप्रेस शिपिंग अगले दिन ऑर्डर मिल जाएगा, अगर वो दूसरी शिपिंग आपको 3 दिन बाद मिलेगा, आपको 5 दिन के अंदर अंदर मिलेगा. आप स्लॉट्स अपनी सेलेक्ट कर सकते हो. हमारे पास है ही कुछ नहीं यार. मेरे पास कस्टमर है, वो मुझे कहता है कि यार मुझे गारंटीड नेक्स्ट डे डिलीवरी चाहिए. मैं अपनी वेबसाइट पे ऑप्शन ही नहीं लगा सकता. आई टॉक टू द कोरियर कंपनी. मैं कहता हूँ कि यार वो कोरियर वाला, वो जो बंदा है वो कहता है मैं 500 रुपया किलो देने के लिए तैयार हूँ. कोरियर कंपनी के पास ऑप्शन ही नहीं है ही नहीं. आप किसी कोरियर कंपनी को कहो, आप अभी जाओ TCS के दफ्तर जाओ और कहो कि मैंने कल पार्सल, मेरा गारंटीड कराची पहुंचना चाहिए. But TCS provides it. I mean, like for the smaller, I just. अच्छा यार, आप लाहौर का कह दो कि गारंटीड 9 बजे से पहले पार्सल पहुंचना चाहिए. They claim it. I've seen it. नहीं पहुंचे. I've seen it with the TCS. They claim it. I'm not sure. I didn't have that sort of an experience, but once or twice it just and getting it done is two very different things. In UK, if you ship a parcel, they make sure and they say कि ये 9 बजे से पहले पार्सल पहुंचेगा तो पहुंचेगा, because I'm paying a premium for that. मैं तो पाकिस्तान में कहता हूँ हाँ ठीक है यार, कुछ बंदे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, वो कहते हैं हाँ यार मैं 500 रुपया देने के लिए तैयार हूँ या 1000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ. कोरियर कंपनीज कहती है हमारे पास मैकेनिज्म ही नहीं है भाई. That is a very weird sort of a thing. Even carrying your volume, you haven't मुझे discussed it बता all दो, with them. कोई कंपनी नहीं है. कौन सी कंपनी है यार पाकिस्तान में? एक भी नहीं. बिकॉज देखो, जो ऑनलाइन शॉपिंग है पूरी दुनिया के अंदर कन्वीनियंस की वजह से ग्रो की. Obviously. ठीक है, पाकिस्तान में पुठी है. पाकिस्तान में कन्वीनियंस नहीं देखता. पाकिस्तान में कहता है प्राइस थोड़ी. पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ लोग कहते हैं अच्छा यार ये आउटफिटर्स के ऊपर 10,000 रुपए का पड़ा हुआ है, एक और मुझे वेबसाइट नजर आई है इधर तो ये चीज 4,000 रुपए की, एंड दे बाय इट ऑनलाइन. दैट इज द ओनली रीजन.
And that is why like a lot of the grocery stores, बहुत सी ऐसी applications आई हैं and they just wiped ग्रोसर ये वो प्राइस की वजह से ही wiped out. हाँ Because वहाँ पे कोई brand building नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है. They just order the convenience based products, and if they're just not getting it convenient, that means they just get wiped out very early, right? और बस पाकिस्तान में एक और थोड़ा सा भी रिटेल का ये भी है कि इट्स एन एक्टिविटी Yeah. कि अगेन लाइक वी डोंट हैव दैट मेनी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट. तो बच्चों का ये भी होता है कि यार माँ उनको कहती है अच्छा चलो जी मैं ग्रोसरी लेने जा रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ अलफता चलो. Yeah. सो इट्स पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल एंड इट्स द सेम विद शॉपिंग एज वेल. वो सैटरडे संडे को माँ बाप कहते हैं अच्छा चलो हम आइसक्रीम भी खा लेंगे, पैकेजेस जाएंगे, आइसक्रीम बच्चों को खिलाएंगे और 2 चीज़ें ले लेंगे. इट्स एंटरटेनमेंट फॉर देम. Yeah. They combine the shopping with the entertainment. हाँ, और वो ऑनलाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको बचत है तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वरना कोई भी नहीं करता पाकिस्तान में. इसी वजह से तो वो नंबर भी नहीं ग्रो कर पा रहा. और जो कन्वीनियंस है वो है ही नहीं. मैं तो आपको भी बता रहा हूँ, मैंने मैं किसी भी वेबसाइट पे टेल मी एनी वेबसाइट, मैं दराज पे करूँ, मैं होम शॉपिंग पे करूँ, मैं कहूँ मुझे अगले दिन पार्सल चाहिए, नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता. In that case, I mean, like a lot of the companies or a lot of newcomers that can come up with a brand, they just need to deal with the problems. They just need पैसे भी तो बहुत ज्यादा चाहिए ना, because this is if somebody manages out infrastructure बहुत ज्यादा चाहिए. Infrastructure में ही बहुत लैग है कि if somebody manages out a good investment initially and manages out his own internal processes very nicely. But लेकिन एक courier एक ऐसा process है वो internally तो नहीं manage कर रहा ना. That is something that he is dependent on the third party, and the payment part too as well. Like these are the 2 elements that he is depending on the third parties, and if these are carrying out so many problems, then वो अपना पर्सनल प्रोसेस जितना भी रिफाइन कर लेगा. यार मैं आपको आज मुझे आप कहते हो कि यार मेरी कल रात को फ्लाइट है, मुझे पार्सल चाहिए, आपने प्रीपेड क्रेडिट कार्ड से मुझे पेमेंट कर दी, मेरा ऑफिस 6 बजे बंद होता है, मैंने पार्सल वो कोरियर को दे दिया और उनको मैंने कहा कि यार ये पार्सल ना इस बंदे की कल फ्लाइट है, इसको दे. उसको मैं फोन करके फॉलो अप, मेरी टीम एक पर्सनल रिक्वेस्ट करती है तो वो पार्सल कल आपको मिलेगा. अगर वो नॉर्मल प्रोसेस से जाए तो कभी भी नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा. There are a lot of barriers for the people coming up into the e-commerce, right? Right. बड़ी like horrifying है. I mean, like we see the countries changing around us quite dramatically, and we are just still struggling up with those even though logistics, I mean, like that hasn't even evolved big time. We see a lot of conveyance going around over here in the country, very conveniently. But still, if we just come across with these sort of problems, I think that is a big problem these days. यार बहुत से कस्टमर्स हम लोग को ऑर्डर देते हैं, फलाना दुकान या किसी की टेलर की दुकान का एड्रेस दे देंगे, वो कहेंगे कि हमारा एड्रेस किसी को भी नहीं पता है इस गांव के अंदर या शहर के अंदर, तो वो फलाना सलीम टेलर्स का नाम दे देंगे, वो सलीम टेलर्स में बंदा जाएगा, फिर वो बंदे को कहेंगे हाँ जी ये अरशद का ऑर्डर आया, वो फिर अरशद को ऑर्डर फ़ोन करेगा, फिर वो सलीम टेलर से जाके वो बंदा पार्सल अपना पैक करता है. दिस इज़ अबाउट 20 to 30% ऑफ द कोरियर कंपनी जो पाकिस्तान के कस्टमर्स के एड्रेसेस, उनके घर का एड्रेस ही इस तरह का, नियर फवारा चौक. अब आप नियर फवारा चौक किस तरह प्लेस करोगे ऑर्डर? वो कहता है मेरा मकान नंबर ही नहीं है, मैं क्या करूं भाई? अब इसमें कुरियर की भी इतनी गलती नहीं है. अब मतलब अगेन मैं बीइंग डेविल्स एडवोकेट, कुरियर्स की गलती है, लेकिन पाकिस्तान में एड्रेस ही नहीं है यार. अब आप किसी गांव में चले जाओ यार, तो क्या सीन होता है यार. इसी तरह people interact that way. है ही नहीं, एड्रेस ही नहीं है. Oh, I can understand. So these orders get processed और आपके तो ये यहाँ अब हमारे वो बंदा भी ये लिखता है. फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में एक ये पिंड है मकुआना, वो मकुआने का फलानी गली का नंबर डाल देगा, उसके घर का एड्रेस ही नहीं है भाई. उधर एक चीज है, जो कोरियर वाला है ही पर्सनली नोज दोस पीपल, उसका पर्सनल कनेक्शन है, वो कहता है ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा. देसी तरीके पे आ जाता है. तो ये है ना, इसी वजह से वी नीड अ सिस्टम. आप वो जियो फेंसिंग और वो सारी फैंसी बातें बता रहे हो, वी डोंट हैव एड्रेसेस इन पाकिस्तान यार. है ही नहीं, एड्रेस ही नहीं है यार. I'm just saying it out like from the courier point of view, they can just label out their area with a very simple geofencing technology that is being used worldwide. They can just label it up. I mean, like if they are just giving it in in the radius of around 25 kilometers in Faisalabad or in Lahore or 60 kilometers in Lahore, they can just simply highlight that area.
highlight the area, provide you a map of that. If your order falls within the radius of that, yeah, there can be a chances of 1 or 2 kilometers outside or inside तो of it. That is totally fine. यही है ना, But पाकिस्तान देखिए tech stack 4-5 किलोमीटर का ही फर्क है. अब कस्टमर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कस्टमर तो स्टिल वन वे और द अदर इफ यू ट्राई टू एलिमिनेट इट अप टू deepest of extent, still the few of the customers is going to pop up like this. They will just write down the vague addresses on board. But I think couriers can come up with a better tech stack. Courier companies can come up with a better tech stack, and while placing the order at your site, they can just come up in a way कि जी ELO or Umar bhai, we don't deliver it over there. Telling you directly right on the software. This is not in our radius, so we cannot do it. What it will do, it will just save your time. It will save customers time that this region doesn't fall in the area, बिल्कुल सही है. and that if it is saving time, next time onwards the customer will be more reliant on a board, like, or whether he'll just provide you an address of some of his relative who lives in that sort of an area. Achha, I have another question that way around. I come across with the customer side कि आपने you come across very vague sort of addresses from the customers. Have you thought about adding the current location feature over there कि current location आप लाजमी लें? यार वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि कोरियर वाला कहता है भाई मेरे पास तो स्मार्टफोन ही नहीं है. वो किस तरह डिलीवरी, वो बटनों वाले फोन से थोड़ी जाके डिलीवरी कर देगा. But यार मेरा अच्छा भाई मैंने करंट लोकेशन डाल दी, ठीक है जी, मैं राइडर हूँ, आपके पास फोन नहीं, मेरे पास फोन ही नहीं है, मैं किस तरह डिलीवर करूंगा? And that is where I am trying to understand in a way, like they are representing a courier company and they are not having a smartphone. That is a big glitch itself. तो यही तो मसले है पाकिस्तान के. How can somebody be a rider in the current world, without having a smartphone? पाकिस्तान है भाई, That itself is. या उसका इंटरनेट नहीं चलेगा अगर स्मार्टफोन होएगा. That is itself. आप मुझे ये खुद आपके, मुझे नहीं पता आपके साथ है, अब तो शायद बहुत बेहतर हो गया. आज से 2 साल पहले अगर मेरा कोई पार्सल आता था, आपको ये पता है कोरियर वाला आपको मिस्ड कॉल मारता. आपका फोन, आपको कॉल बैक करनी पड़ती, फिर आप फोन करते, वो कहता है मैं जी TCS से बात कर रहा हूँ. Even in the current world state where an internet package can do everything. हाँ, You can तो call यार on the WhatsApp. ये है मसले पाकिस्तान के भाई. अब you have to accept this is what's happening in Pakistan. और फिर अगेन इसमें अगर दूसरी बात करें तो कस्टमर भी कोई अच्छा नहीं करता. कोई एक लड़की को प्लेस कर दिया ऑर्डर, एक रैंडम नंबर से कॉल आती है, उसने कोई फॉर एग्जांपल मेकअप की चीज़ मंगाई है, वो फ़ोन करता है कोरियर वाला, वो लड़की फ़ोन नहीं उठाती, वो पार्सल वापस आ जाता है. वो आपको कंपनी कहती है कि जी ये मेरा, वो कंप्लेंट करती है कि मुझे पार्सल नहीं डिलीवर हुआ. वो पूछते हैं, वो कोरियर वाला कहता है कि ये देखें जी मैंने कॉल की थी, इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया. आप लड़की से बात करते हो, कहती मैं रैंडम नंबर से फ़ोन नहीं उठाती. Again, the problem is at both sides. Yeah, it goes both ways. But still, yeah, I understand. I understand from the customer's point of view. But yeah, I mean, like, I think still the processes that requires the tech to be a part of them, I think if they are lacking big time, so e-commerce industry is still far away, हाँ 100%. मैं इसी वजह से तो कह रहा हूँ, आप 4-5% पे पहुंचो, शायद यार अगले 5 साल में 10% पे पहुंच जाए. We have to have like radical changes in the industry. Otherwise, it's growing, but it's not growing at the pace it should be, and it's not making it convenient at all. Convenient वही नहीं है ये काम. Have you tried it out, discussing it out with with so the many problems? times. बहुत दफा. What they just come up with? कुछ भी नहीं, आपको बातें करेंगे, हमने ये भी कर दिया, हमने ये भी कर दिया, हम आपको भी दिखाते हैं लाइव फलाना ऑर्डर दिखाते. डजंट वर्क मैन. मैं आपको बता तो रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी है ही कोई नहीं. आपका अभी आप पोर्टल खोलो लेपर्ड्स का, TCS का, कि मैंने 1000 पार्सल लेपर्ड्स के थ्रू भेजे, मैं उसका स्टेटस चेक करना चाहता हूँ. वो स्टेटस आएगा शिफ्ट, कस्टमर को फोन करेगा, वो कहेगा कि मैंने तो रिफ्यूज कर दिया पार्सल. या पार्सल डिलीवर्ड होएगा, सिस्टम में पेंडिंग नजर आ रहा होगा. तो ये वो उनके अपना देखो ना, आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है, आप किस लिए ट्रैकिंग नंबर यूज करते हो कि मेरा पार्सल किधर है? वो स्टेटस ही नहीं ठीक होता. These are few of the things like people need to think about before starting an e-commerce business. हाँ, this is a major pain point. And main pain point, why it is creating that sort of a pain, because it is not in our control. हाँ, और क्या मैं कुछ भी नहीं कर third party. और फिर आप लड़ाइयाँ ही करते हो कुरियर कंपनी के साथ. And have you seen like it has gone better in the recent times or not at all? Not at all. It has gone worse.
It has gone worse. Even though despite all the changes coming across has in the gone world worse. state, it's gone worse. यार एक और चीज़ भी है. आई डोंट माइंड. ओके, आई एम जस्ट गोना गिव यू एन एग्जांपल. मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया 2013 में, तो कोरियर का रेट था मेरा ख्याल है 270-280 रुपए किलो. अब यू कैन ईजिली गेट अ डील फॉर 90 to 100-110 रुपीज़ kg. आप मुझे बताएं कि कौन सा बिजनेस है, देखो इन्फ्लेशन हुई, डॉलर रुपी डिवैल्यूएशन हुई, जो पार्सल के मैं 10 साल पहले 270-280 रुपए देता था, मैं अब इतनी महंगाई के ज़माने में 110 रुपए दे रहा हूँ, तो मुझे बताओ क्वालिटी बेहतर हो सकती है? Not at all. हो ही नहीं सकती. That means that their focus is completely not there. बिकॉज यार पैसे भी तो नहीं दे रहे ना. अब यहाँ सारी वो प्राइसिंग वाली चीज़ चली गई है. मैं तो कोरियर कंपनी को कहता हूँ भाई मेरे से 20 रुपए, तू मेरे से 50 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन सक्सेसफुल डिलीवरी होनी चाहिए. They don't have a mechanism. And still, like that, these are the few of the things that is just blowing my mind away. You know, you just need to say for that. यार देखो ना, मेरी तरह का एक आधा बंदा होएगा Yeah. जो कहता है यार हम लोगों को सक्सेसफुल डिलीवरी. आई डोंट नो हाउ द मार्केट वर्क्स, आई डोंट नो हाउ द अदर एंटरप्रेन्योर्स थिंक, बट आई फील लाइक कि मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई तुम लोग मेरे से पैसे एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन ये रिटर्न्स खत्म करो. क्योंकि यार मैं एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी मैंने आपके साथ ये एड्रेसेस और ये सारी बातें की, भाई डाक खाना भी तो है, पाकिस्तान पोस्ट भी तो है, वो भी तो इसी तरह चल रहा है. वो पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में पूरे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है, वो करता ही है ना डिलीवर. अब पता नहीं क्या हालात है पाकिस्तान पोस्ट के, लेकिन हमारे मतलब लोग तो यही कहते हैं ना, हर गांव में पेंशन्स भी जाती थी, सब कुछ जाता था, और डाक खाने से ही जाता था ना यार. It's just the process, like their process is not automated, but yeah, they're delivering, you know, almost at every corner of the country. तो Yeah. So there is a chance, there is a complete, you know, a possibility of improving it out, but I'm just amazed in the fact that they're just not trying to, you know, improve themselves. And that is a main problem these days out. And we see a lot of, you know, a brand related stuff, people coming in and going out of this business, but I think we are just missing out a main problem out of it, which are the third parties. Third parties are not supporting, their businesses is going nowhere, right? And I think, yeah, that is the main, and that affects the revenue big time. हाँ 100% यार, बहुत ज़्यादा मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है. मुझे, मैं बहुत दफ़ा लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं यार हमने एक दफ़ा ELO से ऑर्डर किया तो हमें पार्सल ही नहीं मिला. एंड देन आप घर जाके अपना स्टेटस देखते हो, आप कहते हो यार ये तो शिप हुआ था, इसने रिफ्यूज़ की. उसको कहते हो आपने रिफ्यूज़ की, वो कहते हैं मुझे तो कॉल ही नहीं आई, मुझे तो किसी का पता ही नहीं है. अब वो कोरियर ने फेक कॉमेंट डाल दिया होगा. Again, for us, it's a nightmare as well, because we cannot really call thousands of people every day जो रोज ऑर्डर करते हैं. My goodness. Oh, despite discussing about so many challenges, I wanna question it out that way. What is the biggest challenge you come across? Is this the biggest this is another thing is कि customers पाकिस्तान में कस्टमर का जो behavior है वो बड़ा फर्क है यार. Changing customer behavior is hard. Well, I know I cannot change it, but it's hard. Like, for example, simple things like reading the size chart, reading the policy, reading about the product material. वो आपको ऑर्डर फोन करके कहेगा कि ये तो मैंने मंगाया ही नहीं था, ये तो फलानी चीज़ आ गई, एंड यूर लाइक डिड यू रीड द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन. मैं क्यों पढ़ूँ, ये फोटो में तो फोटो में वैसा है, लेकिन इसका मटेरियल वैसा नहीं है. और भाई ऑनलाइन तूने फोटो देखी है, किस तरह मटेरियल का तुझे पता चल सकता? नहीं चल सकता यार. हम लिख ही सकते हैं ना, वो नहीं पड़ेगा, मटेरियल नहीं पड़ेगा. वो कहेगा सर्दियों की चीज़ है, गर्मियों में ले लेगा, कहेगा मोटी बड़ी है. एंड यूर लाइक अच्छा यार अब बताएं, मैंने तो लिखा हुआ है कि यार दिस इज आइडियल फॉर विंटर्स, मैंने नहीं पढ़ा. फिर वो आपके साथ बहस करनी शुरू कर देगा, क्या आप गर्मियों के अंदर सर्दी की चीज़ बेच क्यों रहे हो? एंड यूर लाइक यार तू ना ले भाई. मतलब इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा है ना. फिर यही है कि पड़ेगा नहीं. फॉर एग्जाम्पल लाइक वी सेंड आउट रिटर्न फॉर्म विद एवरी पार्सल, वी स्टिल गेट कॉल्स कि पार्सल मैंने वापस किस तरह करना है. और वो फॉर्म पूरा बाकायदा साथ जाता है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या करना है, पूछेगा. सो पाकिस्तान के अंदर ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि प्रोसेस नोबडी वांट्स टू रीड. दे आर लाइक कि मैं फ़ोन करूँगा मेरे सारे काम हो जाएंगे. तो बस ये मसला है. Too dependent on the fact that they will just, you know, claim यार everything. मुझे एज अ नेशन भी एक थोड़ा सा मसला है. एज अ नेशन मुझे ये मसला है कि यार हम सारे अपने आप को समझते हैं सेठ. जो एक मोटरसाइकिल वाला भी है जिसकी 30,000 रुपया नौकरी भी है ना, वो भी जाएगा पान वाली दुकान पे, वो हॉर्न मारेगा, वो बंदा आएगा, वो पान का ऑर्डर लेके जाएगा उससे.
तो वो एक है हमारे में शहनशाही और सेठपुना, जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा ख़राब है. वी डोंट वांट टू डू आवर थिंग्स, वी डोंट वांट टू डू थिंग्स द करेक्ट वे. हम 10 गलतियां करके ठीक होते हैं. कस्टमर भी हमारा इसी तरह, वो कहेगा कि हाँ मैंने से गलत साइज हो गया तो क्या आप ठीक करें ना, मैं आपका कस्टमर हूँ. एंड यू आर लाइक यार तू भाई तेरे से गलती हुई है, मैं क्यों ठीक करूँ यार. हाँ. So customers say that, and yeah, that is a horrible story altogether with the local e-commerce, local e-commerce way and all. So I think it is a healthy discussion all around. I want to question it out few of the last things over here in this episode regarding your personal life in that case. Any hard phase you come across with considering the ELO, running up the ELO, any hard phase you come across? Because people see like, you're the founder of ELO and life is just going very easy for you. I mean, like being owning, a bigger brand and sitting at a fancy destination over there, it is all easy to go with. So any hard phase you come across with the ELO, you felt it out that नहीं way? यार, again this is again like I spend so much time on my business, तो पास परेशानियां तो होती हैं यार. It's not easy. I have to like figure out things. Some employees leave. जब employee छोड़ के जाता है उसकी replacement ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है. एक business function ठीक चल रहा है उसको दोबारा से resume करना बड़ा challenging है यार. Finding the right people for the company is very hard. Finding the right team is very hard. I am still struggling finding good resources. तो ये बड़े बड़े चैलेंजेस हैं. और अगर वो नहीं कोई कर रहा होता तो मुझे करने पड़ते हैं. मुझे रात 12 बजे भी अगर बैठना पड़ता तो आई हैव टू डू दोज थिंग्स. इट्स नॉट दैट सिंपल. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वर्किंग. आई स्टिल वर्क मंडे टू सैटरडे. संडे को भी कभी कभी काम करना पड़ता है मुझे. मैं अभी शायद गाड़ी में बैठूं काम करूं. आई डोंट. सो इट्स वेरी हार्ड. Any particular event that happened that way around when you felt like, yeah, this was probably the toughest one, like at ELO, maybe नहीं the यार, ये highest number वाला of returns ये came नहीं through or नहीं, anything? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ बिजनेस. Yeah. यार ऊपर नीचे तो होता ही रहता है ना. अब अगर मैं डिसहार्ट हो जाऊं और मैं कहूँ नहीं यार मैंने नहीं करना, तो फिर यार तुम बिजनेसमैन थोड़ी हो. फिर तुम यार जाके जुआ खेलो फिर. मतलब अगेन यू विन सम यू लूज सम. ये तो हो ही नहीं सकता कि सारी जिंदगी आपकी कोई मतलब कोई आपको फेलियर ही ना मिले. ये तो हो ही नहीं सकता यार कि हर वक्त आप जीतते रहो जीतते रहो जीतते रहो. ये नहीं हो सकता जिंदगी के अंदर. बिजनेस में भी नहीं हो सकता यार. कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ बुरे दिन होते हैं. हाँ, अच्छे दिन से भी मतलब आप ज्यादा प्राउड ना हो, और जो बुरे दिन है आप उनसे सीखो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा दिन अगला इससे बेहतर गुजरे. So I take life like that. It's part of life. Yeah. Wrapping it up with a very simple question, and I think that is going to be a bit of a wisdom for the people who are going to listen it out. Any best advice you ever come across in your surrounding, like in your surrounding, that this person has said something, that contains quality, and that probably just set the tone for you to move ahead with? Don't fall in love with your product. Fall in love with your customer. Because बहुत से जो प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. जैसे नोकिया स्टार्टेड ऑफ बाय सेलिंग टिश्यू पेपर, और फिर उन्होंने मोबाइल फोन्स बेचे. अगर वो कहते हैं नहीं जी हमने टिश्यू पेपर ही सारी जिंदगी बेचते रहना, तो वो इतनी बड़ी कंपनी ना बनती. सो यू हैव टू इवॉल्व. इफ यू अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स नीड, तो फिर आपकी लॉन्जेविटी भी ज़्यादा हो जाती है. लेकिन अगर वो ही टिश्यू पेपर बेचते रहते तो फिर काम खराब ही होना था. जिस तरह सैमसंग की भी ये कहानी है. सैमसंग यूज्ड टू बी अ ग्रोसरी स्टोर, अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए. सो दे अंडरस्टूड देयर कस्टमर. तो अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फॉलिंग इन लव विद योर प्रोडक्ट. सो फॉल इन लव विद योर कस्टमर्स. I think that is pretty much it for even the people who are going to start the e-commerce. But still, I would like to ask one more last question on this way, in this course of it. Any sort of a best advice for the people who are going to start the e-commerce from now? Like despite all the challenges that we discussed. Yeah, again, I feel like मैं जिस तरह आपको ये कह रहा हूँ कि if you want to start it, just start it. फिर आप लोग ये ना सोचो. हाँ, again, done is better than perfect. कि like getting things done is still better than perfect, because perfect के चक्करों के अंदर आप काम ही नहीं शुरू करते. Done है ना, एक दफ़ा काम तो करो, फिर देखी जाएगी क्या होएगा. ये ई कॉमर्स में मैंने आपको सारी रिटर्न्स और ये सारी चीज़ें, आज 10 साल बाद भी मैं यहाँ बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ ना, तो फिर काम शुरू करो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. And मसले तो हैं.
And ELO has been at that sort of a stage where you envisioned it at, or is it still going नहीं, to be? मैंने तो आपको बताया कि for me, I never thought that it's gonna last 10 years. I only thought it's gonna be ये हमारे leftovers होंगे, हम बेचेंगे, हम निकल जाएंगे, काम खत्म, chapter closed. I never thought like that. वो हाँ, vision change हो गया when it started making money and we thought it was a solid business. But it took me like 6, 7 months, 8 months कि हाँ, अब इस काम में है. और again, I don't think it's it can always be bigger than what it is right now. So. ये तो I बिल्कुल think that's ऐसे pretty much it, and that sums up a lot of useful discussion regarding the e-commerce and the local market and the Pakistan market, because a lot of e-commerce brands just come up and goes by, and I think there is a big market that they can just capture up, learning from the experiences they've already done in their life. So that's why we just invited you up over here, and thank you for coming over here. Thank you. And it had been a very nice discussion that way, and I think it can probably just help a lot of people out so that they can just set up the core of their life in a productive way. Thank you. Thank you. Thank you.